Join your palms for the beginning prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Gurave Namaha, Shri Gurave Namaha. Gently rub your palms, feel the warmth, open your eyes. Namaste, everyone. A warm welcome to every one of you on behalf of Yoga Vijnana Prabodhini. I am Jyoti and would like to give small introduction about the Institute. We'll start with introduction for the Institute. It's been a long journey of 25 years. Our institute has been started by respected Dr. Premchand Jain sir and Dr. Kiranjan ma'am, along with other professional friends. Our institute, Yoga Vijnana Prabodhini, is affiliated to YCMOU, that is the Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University, KKSU, that is the Kavi Kulguru Kavidas Sanskrit University, and Tilak Maharshi Vidyapit for various courses like Yoga Shikshak, BA and MA in Yoga, Yoga Therapy courses, which are organized by Ayush Mantralaya. Institute has trained more than 1,000 yoga teachers. Almost every one of them is spreading the knowledge of the yoga to all over the country, also in the abroad. We had successfully conducted the YCP batches for level 2, 3, and 4. And our success rate is more than 90%. It's a happy journey that we are going in the path of the yoga. Our recent initiative is yoga therapy, and we have also completed 2 successful batches for the therapy. MA Yoga, the 3rd batch is also going on. The most important initiative is we are also conducting Pragya Samvardhan sessions for improving the memory in the children. Other beneficial initiatives are effective parenting and stress management workshops, that is Anandamay Jeevan Shaili. It is helping the people to face and solve the difficulties in day-to-day life. Apart from all this good work, there are regular yoga classes and therapy sessions are going on. This is all about what we are doing. We'll hand over to Shanti ma'am. She will follow the session. Thank you. Thank you, Jyoti. Good evening, Hari Om to everybody. Myself, Shanti Iyer. I'm a student of Sir's Institute. I'll be briefing today's special guest, that is Dr. Pallavi Deshpande. Dr. Deshpande is a very unique personality. She has a multiple feathers on a cap. It is like what to describe her, how to describe her. She's a very multi-skilled and very talented person. I also know her personally, very down to earth, and she has been gifted by God with various achievements, which is it is. Hello, please mute yourself. Camera is opened. Please mute. She has been gifted with multiple skills, which helps her in day-to-day life to treat her patients also in terms of their therapy or in terms of their fitness or in terms of their holistic nutrition. So I'll just brief in very short about her. Dr. Pallavi Deshpande is born in a village near to Nasik, which is just 20 kilometers from Nasik. And she holds a world record of the youngest magician. Apart from that, professionally, she is a master in physiotherapist and a superb fitness coach. I have visited her clinic, which is well equipped with modern equipments and very, very, very humble and cordial couples, which makes you feel at home when you enter their clinic.
And she is also an empathetic life coach, a hypnotherapist, and also holistic nutritionist. Apart from that, as a modern doctor, she's a YouTuber also, and author of many books, and also a public speaker. Now I'll just give you in brief about her different phases of her life. In the first phase of her life, she is gifted as a little magician, or she's been awarded from the Limca Book of Records as the youngest magician girl in the world for performing more than 2.5 hours show in the age group of 9 to 10 years. And this is really a great achievement for the whole country. And over 3,500 shows she has been conducted since she's been young and also abroad. Now coming to the second phase of her life, Dr. Pallavi Deshpande is a qualified physiotherapist, not a plain physiotherapist. She's a master's in physiotherapist from the world-renowned institute of the nation, that is AIIPMR, that is All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai. And she works with immense pleasure and passions. And she added that magic touch to her patients in healing also. So not taking much of your time, I would hand over the dais to Dr. Pallavi Deshpande. Ma'am, please continue. Thank you. Thank you so much, Shanti ma'am. That was such a pleasing introduction. Thank you so much. And I'm so happy to see you and blessed to be connected to Dr. Premchand Ji Jain sir and ma'am. They are also wonderful people, beautiful souls. Hats off to them for their consistent work, like which they started way back, and even now it's going on with huge growth. And that's so inspiring for me also. Like even at this age, I have seen them being open to all the new tools that are coming up. So they take so much of efforts to keep up with the new trends and making sure that the students are benefited with all the updates, upcoming knowledge or all over the globe. And I feel blessed to contribute in any which way. Thank you so much for choosing me for today's session. Thank you to each one of you for being here. I want you to participate fully, and I would like to see your videos on, because today's session is of posture. So let me see all beautiful faces with graceful postures. And whatever time we go through, make sure that you keep up with being tall. Okay, so promise? Yeah, everyone fully there with me? Awesome. And I want active participation of you all. The more you participate, the more would be the learning for each one of us, right? So how do you understand posture? Let me understand your world first. I'm sure in the institute, whatever is the kind of training and the quality of education that you're getting, I would love to hear it from you first, and then I add on to it. Is that fine? So let it be interactive, and you could be wrong, you could miss out on things. We are all learning together. So please help people unmute and talk. I would request that to the admin. So how do you understand the word posture, and why is it so important? What do you think? Matlab if you understand, jab bacha, a baby is born, और फिर धीरे धीरे उसके माइलस्टोन्स हम चेक करते हैं. सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? मान कधी पकड़ली होती है ना, ऐसे सुना है ना? हाँ, कधी बसायला लागले, कधी उभं राहायला लागला, कधी चालायला लागला. And then how, right? So how important it is, and how do we understand this? Such a powerful, where we have a body, we need to know how it is and how to use it to the best, and help people around us also to do the same, right? So any one of you, please unmute and start sharing maybe a word or maybe a line, or express it in your own way. Yeah, I would say posture is something like how we are carrying our body.
So it can be like how we are sitting, how we are walking. So it matters a lot how our spine is in a way. So everything comes under the posture. Yes, excellent. Anyone else would like to um, add to it? Posture define your personality or and your confidence. Mm-hmm. Very good. Very good. Okay. So what are we talking about when we say a posture? क्या हम बोलेंगे हाथ का posture, feet का? So we posture Pose. बोलने के बाद क्या आता है आंखों के सामने? शरीर रचना कैसे? मतलब सबसे पहले क्या आएगा आंखों के सामने? What are we mainly talking about is the, yes, there is a hand raised. Please speak out. Among the 84 lakh creatures in the nature, God has given speciality for human beings. If we keenly observe all other animals, the vertebral column is horizontal to the floor. Only human being has got a vertical vertebrae. Remaining all animals has got horizontal. So that is the main criteria, key role which decides human body's posture. It has to be always erect and straight. Then only all the fluids and energy, blood, air transmission takes place properly. If there is a bend, then there will be disturbance for the free flow. Excellent, excellent, very Thank you. beautifully shared. और किसी को भी share करना है? Anyone else? There was one more hand raise, I suppose. Or anyone else would like to add? So we are blessed, definitely, and we need to be really grateful to be the, chosen ones, to have a wonderful body, which we need to learn to carry it appropriately. If not, you will yourself end up damaging it, okay, and reducing the efficiency in every area of life, right? So anyone else would like to add on to it? There are quite many people in the group. Come on, speak up. Everyone, I want to participate. Like, please share. It's fine. You could be different, and that's okay. Okay. So अभी हम लोग सब बैठे हैं, most of us, every one of us. Yes. So can we start with, sitting posture? Right? Okay. Then once you know what is the normal posture, then we can move ahead with how it varies and how it would affect us, right? Okay. So when it comes to sitting posture, what is happening? Like, most of people, the patients, like we are into even physiotherapy for past, I entered it in 1998. So more than 20 years, right? So what happens is people feel कि यार हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया मैम, कुछ नहीं किया, फिर भी दर्द है, कुछ ज्यादा नहीं, अभी तो सब काम भी बहू कर लेती है, मेरे पे कुछ आता भी नहीं है, फिर भी क्यों तकलीफ हो रही है, right? हाँ, so what happens is, understand one very very important thing, कि आपके skeleton को, वो ढांचे को against gravity hold करना, there is huge static work that is happening inside you even now. Otherwise we would all collapse, no? यहाँ से यहाँ तक भी hold करना consistently. Is there a lot of work going on inside? Can you relate to me?
Yes, that we take for granted at times, isn't it? So what happens then? How does it differ? है ना, पहले तो सब ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? या तो वर्क का बोझा, करने का तरीका, इमोशंस का बोझा, or small minor major traumas that we go through and then we neglect, or we keep on neglecting our body signals by suppressing it with medications. और फिर वो पोस्चर धीरे 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 हमें समझता भी नहीं है. And for women there would be so many processes that we go through when it comes to motherhood, but then we need to do something extra to reverse it near normal and to keep it normal, isn't it? So उसके लिए क्या चाहिए? One is your awareness. Second is your positive emotions. And third is muscle capacity to hold the skeleton in place. Right? होता क्या है? Why awareness is important? कि मैं कामों में इतना उलझ गई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कैसे बैठी हूँ, कैसे फोन हैंडल कर रही हूँ. And there are like we are into the multitasking phase, no? तो इधर फोन भी चालू है, इधर काम भी चालू है, ऐसा होता है ना? So या स्क्रीन एक साइड में है. So we at times we even know. बट हम क्या करते पता है? वी आर वायर्ड टू ब्लेम. तो हम क्या करते हैं? हम चेयर बदल देंगे, हम वो गद्दी बदल देंगे, फोम वाला इवन बेटर लाएंगे. हम क्या बोलते हैं उसको, द स्क्रीन एंड दिस एंड दैट, वी गो टू ऑल lakhs and lakhs of rupees we will put there to fix and change everything around us but us. Isn't it? But the wisdom is that if you understand your own self and learn to carry yourself appropriately, definitely you can save a lot of energy, lot of money, and focus on your work and life better and with good emotions. Right? Why I said positive emotions? Why do you think I said so? Because negative emotions will take our energy from the body. Okay. I can see Dr. Premchand Jain, sir. I would love to take your blessings. I saw you on the screen. Yes, the negative emotions you feel will take energy. Okay. Positivity And helps us to remain aware of. We are more aware when we are positive. So in negativity, maybe things are like not in our hand and we go with the flow. Okay. No, going with the flow is, it could be taken positively also. But yeah, I got, we get trapped in the negative cycle. Yeah. So, थोड़ी देर के लिए हम लोग सब ऐसा जाए. Go down. Go down. Go down. Leave it loose. Now close your eyes and just observe your emotions. How do you feel? Now just goes up. Bring that smile on your face. So can you relate to one thing?
that your emotions are playing a huge role to maintain a better posture. When you are in a happy state of mind, you are naturally tall. But as you feel stressed about work and family and the burden and money area and this and that, what it will pull you? So just by reminding yourself of better emotions, could you? I know I'm a physiotherapist, but I'm a hardcore believer in emotions. So we need to definitely keep this in our awareness, right? Yes. And then is working on the appropriate muscles. What happens is we, in today's world, we tend to overuse our muscles to a large extent, not even thinking about increasing its capacity. You know, or just seeing that is the muscle capable enough to hold the skeleton in place for a longer duration of time. So we need to understand the postural muscles and then improve the efficiency of those muscles to hold the skeleton in place for a longer duration. Is it possible? Yes, by specific muscle training. Right? So if I'm sitting, I know that my chin needs to be tucked in, shoulders need to be pulled back, abs slightly contracted, and me sitting tall. So who will do that? The muscles. So I need strong back muscles for holding the shoulder blades in place. No, otherwise it will go like this. This is known as stretch weakness. Over a period ऐसे होता ही है ना कि धीरे 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 वो स्ट्रेच वीकनेस में चले जाता है, फिर आगे के मसल्स टाइट हो जाते हैं, पीछे के रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होके स्ट्रेच वीकनेस में चले जाते हैं, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड. I have two of my team members supporting me. So let us understand sitting posture, two variations which are most common. Is that okay? What do you think? What is the most common mistake or problem that you can identify? You may not know the names, but you can identify in sitting. What is the common abnormality or variation? See, abnormal शब्द में नहीं अटकना, okay? Normal हम समझ गए. Abnormal क्या होगा? Which is away from the normal, right? So anyone who could identify that this is something which is away from normal, and then how I can reverse it. Sitting. We are only talking about sitting. So I want you to brainstorm and share. Until then, we help you with the same. Yes, please, someone. Hump in the back and roll shoulders coming forward. That is something not normal. Okay, so shoulders coming forward. Little hump in the back. And hump in the back. Okay, anyone else? Okay, so let's look at this first. Okay. I want you to see. What can you see? How is the neck? Have you seen people in this posture ever? थोड़ा exaggeration होगा, but है ऐसा? होता है ऐसे? कब?
screen, Yes. TV, even at times driving. This is known as forward head. Forward head मतलब गर्दन जो है वो उसके जगह से आगे चली गई है. एक्चुअल क्या है? The ear and shoulder blades are in one line. Okay, go back to the same posture. आप खुद भी चाहो तो करके देख सकते हो. Why is this important? इसमें क्या होगा? Backbone is bent. हाँ, You may face the And- cervical problems because of कैसे the प्रॉब्लम्स आएंगे सर्वाइकल में इससे? Cervical spondylitis. because there is a band, the neck is we are resisting it in the forward direction, which is not the correct one. So it may create a strain into the vertebrae upsides, C1 to C7. This is what I feel. Okay, good. You're trying. And let's see one more. ऐसे भी बैठते हैं लोग. Have you seen? Most. है ना? Maximum, yes. Yes. Relaxed posture, so called. And then let's get back to the near normal. Okay. And let me also show you the even better. Yeah. I hope you can see me. Yeah. Okay. ठीक है. Keep looking there. Yeah. Okay. Now let's look at what is more advisable. कमर से पूरा पीछे सरक जाना है. पूरा पीछे. अजून थोड़ा मागे. And take a support at the mid back and relax. Okay. This is more, can you see? Is it more graceful, more appropriate? Yes. Yes. Now let me just, yeah. Okay. Now understand one thing. Yeah, let me fix the camera again. Yes. Yeah. How is this spine? When you say, अभी आपने बोला मैम cervical C1 to C7, right? मतलब there is, हमने उसको 3 parts में divide किया है for easy understanding, है ना? There are, it is made up of vertebrae, right? Several vertebrae. कितने होते हैं? गर्दन में कितने होते हैं? 7. 7, C1 to हाँ. C7. Yes. Then mid back होती है, thoracic spine बोलते हैं हम हमारे terms में उसको ना. तो वो कितने होते हैं? 12 in 12, T1 to T12. Very good. And then there is lumbar spine and so-called Makadhad. Sacrum cox. Yes. हाँ. So all are total 33 vertebrae. हाँ. Okay. So ये सब straight line में होना चाहिए क्या? अगर हाँ हम बोलते हैं ना sit tall, sit straight, तो फिर spine भी तो straight होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है. Straight नहीं है मतलब गड़बड़ है. Straight in the sense it's in concave in a wave. That way we have to maintain. हाँ, because if it is straight then it's a problem. That is known as bamboo spine. जहाँ पे the normal arches are reduced. ऐसे भी patients आते हैं ना. Okay, so then what is important for a better posture? अगर हम side से देखेंगे तो neck जो है वो कैसे होता है? It is C curve, right? Mid back kyphotic, normal kyphosis, normal, not hyper. Okay, and then normal lordosis.
लॉर्डोसिस ये टर्म यूज होता है, वो टर्म में नहीं अटकना, ठीक है। नेक ऐसा होता है, मिड बैक ऐसे होता है और कमर वापस ऐसे होता है, ओके। अब लोग क्या करते हैं बहुत बार, इवन मोस्ट ऑफ अस डू दैट, कि अगर गर्दन का प्रॉब्लम है तो गर्दन में सपोर्ट ले लिया, कमर का प्रॉब्लम है तो कमर के यहाँ पिलो रख लिया, करते हैं ना ऐसा। डू यू थिंक इट इज गुड टू डू दैट? So we need to correct internally. Sitting, I am only talking about sitting. We might be aggravating the problem, ma'am, by doing that. Correct. So 2 feedbacks I got. One is we could aggravate the problem, and second feedback that I got is कि नहीं सपोर्ट लेके क्या होगा, मसल एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, both are right. So why will we aggravate the problem? अभी समझो, ये तीनों जो कर्व्स है ना, नेक, मिड बैक और लो बैक, ये एक दूसरे के दे आर कंपेंसेटरी कर्व्स, ऐसा बोलते हैं। कंपेंसेटरी कर्व्स मतलब क्या? बॉडी हैज अ नेचुरल कैपेसिटी टू अडैप्ट, कि एक कर्व बढ़ेगा ना तो उसका असर दूसरे पे होगा, राइट। सो व्हाट इज विजडम? अगर मैं कमर का ये जो people with low back pain, they have say changed posture in low back, ठीक है, और अगर मैं वहां पर पिलो रख लूं तो क्या होगा, वो जो कर्व है वो और बढ़ेगा ना, और अंदर जाएगा। तो मुझे क्या करना है उस वक्त, इधर से बीच में से करेक्ट किया तो कंपेंसेशन के कारण क्या होगा, नेक और लो बैक तीनों जगह पे आएंगे। Able to understand what I want to say? इसलिए हमने क्या किया, सपोर्ट कहाँ दिया उनको, मिड बैक में दिया। और आपने देखा मिड बैक में सपोर्ट लेते ही क्या हुआ, उनका पूरा स्पाइन हमें बेटर, इरेक्ट, मोर ग्रेसफुल दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? आर यू ऑल विथ मी? एबल टू कनेक्ट टू व्हाट आई एम सेइंग? Yes. So what we need to do is first understand कि पोस्चर में बदल है नहीं है। अभी ये जो था फॉरवर्ड हेड, उसमें क्या होगा, सब लोग इधर हाथ रखो पीछे, अपने ही गर्दन के पीछे, या गो टू फॉरवर्ड हेड। व्हाट इज हैपनिंग, टेल मी। More C curve. हाँ, क्या हुआ? ऊपर के जो वर्टिब्रेज है गर्दन के, कंसिडर अप टू C3, उनका क्राउडिंग हो गया। गो बैक टू चिन टक, नॉर्मल स्पेस आ गया वापस। सो नेक हम समझ गए कि नेक हमको कैसा रखना चाहिए। यूजुअली इट गोज फॉरवर्ड। व्हाई? Why does it go forward? Under the bend, Why does it go forward? we feel that instead of keeping in entire body moving forward, just we move only head forward so that it happens. Okay, good. We are thinking. हाँ, see, I'm saying कि compensation करती है बॉडी। तो अगर मिड बैक स्लाउच किया तो नेचुरल क्या है कंपेंसेशन? नेचुरल कंपेंसेशन क्या है? अगर कोई इंसान स्लाउचिंग में चला जाए, जाओ ना, अभी जाओ, खुद करके देखो, तो आपको वापस खुद को ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करने को नेक को क्या करना पड़ेगा?
ऊपर उठाना So, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? yes. इसलिए हमें अगर नेक फॉरवर्ड है तो भी हम सपोर्ट कहाँ देंगे? मिड बैक को ही करेक्ट करेंगे हम, वो नेक का गैप नहीं भरेंगे. I am only talking about awareness of posture. We are not talking about the corrective exercises right now. करेक्टिव एक्सरसाइजेस में जो पीछे के मसल्स है उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा, और जो आगे के है वो स्ट्रेच वीकनेस में गया ना, उनको उनका एफिशिएंसी, उनका स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा. ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जो मसल स्ट्रेच्ड पोजीशन में है उसको टाइट करना है, और जो ऑलरेडी टाइट है उसको खोलना है. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक देखिए, तो धीरे 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 हम नियर नॉर्मल उसको लेके आ पाएंगे. Are you all with me as of now? Yes, right? Yes. बहुत Yes. सारे लोग हमारे पास आते हैं विद अ कंप्लेन कि हाँ, शोल्डर जो है ना वो ऊपर उठाते वक्त ही बहुत पेन होता है. You know why? Maybe because of wrong posture. Yes. They're not using the What could go muscles. wrong? What could go wrong? Even sometimes, if there is a wrong in the vehicle and continuously if they are driving the vehicle, that way also have impact on the shoulders. Yeah, I can see ma'am also. Yes, nice to see you, ma'am, taking your blessings as well. Yes. Let's come to sitting static posture only first. What could go wrong? What could be the thing? Even if sitting in the chair also, people may not sit in the center. Some will give bending towards right, some will give bending towards left. They may not sit exactly in the center. Or just they put the elbow on the handle and they take bend some side. Yes, okay, good, good, good. Yeah, and understand one thing. एक बार मैं ऐसे बैठी हूँ कुछ नहीं होगा, बट मेरा अगर वो आदत है कि हर बार यही हाथ इधर जाएगा और मैं ऐसे ही लीन करूंगी, तो then one side muscles would definitely be impacted by creating, हम ही muscle imbalance create कर रहे हैं अनजाने में, if it becomes a habit. So what happens is, let's connect it to the simple, change in posture that we were talking since last few minutes or almost half an hour or more now, is कि when you go into slouching everyone, go, जाओ, bend करो. हाँ, okay. अब क्या होता है, how is the shoulder अपनी जगह से आगे हिल गया क्या स्लाउच करते? ईयर और शोल्डर एक लाइन में नहीं है ना अभी. हाँ, तो जब वो अपने जगह पे नहीं है और हम उसको उठाएंगे तो क्या वो अलाइन रहेगा? Alignment got damaged. हाँ, तो पेन, बॉडी तो पेन इज अ सिग्नल. बॉडी बोलेगी पहला इसको जगह पे लाओ फिर ऊपर उठाओ. दिस इज द ओनली वे बॉडी टेल्स पेन होता है, राइट? तो मेडिसिन खा के तो वो नहीं जाने वाला है. So as a student of yoga, we need to understand that first इसको ठीक करना पड़ेगा ना, right? And simple awareness could also do it. So now what happens is, अभी आप ear और shoulder एक जगह पे लाओ. Everyone, pull your shoulders back enough to just don't overcorrect it, okay? Just enough to bring in the line of ear, and then you lift your hand and again take it forward, and then you lift your hand and tell me if there is a difference.
Is there a difference? When it is erect, when we are into the correct way, we are taking less efforts to move it upward. While when we are bulging, it is taking more, little hard. Yes, absolutely. और एक बार नहीं, लोगों की आदत हो जाती है और हमें समझता भी नहीं, because all the time हमारा हाथ आगे ही होता है ना, राइटिंग आगे, बेबी आगे, कुकिंग आगे, ड्राइविंग आगे, तो वो आगे ही रह जाता है अगर ध्यान नहीं दिया तो. So you have to be in awareness and do a little extra to keep it आगे. I mean, in place, in place. Okay, so neck हो गया, shoulder हो गया, mid back we have talked. Now, why होता क्या है? Shoulder के ऊपर neck and head is free. Head का weight है, right? So weight के कारण क्या होगा? Muscles के ऊपर का जो load है वो, especially when you are, हाँ, hence neck stability is very, very important, right? So neck कैसा होना चाहिए? Muscles पे कम से कम load कब आएगा? We call it the muscles being at mechanical advantaged position. So when it is forward ahead, it is mechanical disadvantaged posture. And here it is mechanically advantaged posture. मतलब muscles कम से कम काम करना पड़ रहा है उनको, they are happy, and there is a lot of room or enough room for all the other structures that are to be accommodated inside. Simple? Yes. Now can we move to standing posture? Can we go ahead and move to standing posture? I want one of you to tell me the changes, if at all you have ever noticed in people around you or with you, that what goes wrong. Simple we will take. There are many variations. So Again, as you have shown, sitting in the chair, they bend one side. Even standing also, they can't stand properly. They gave much load on one leg and much less load on other leg. okay, good. That is one variation. What else? See, with age, what happens? If you don't take care, I can see ma'am and sir sitting so very, gracefully with such a aligned and awesome posture. I wish I have the same when I reach your age, sir and ma'am. Definitely you will have that. Because you are correcting others and you are correcting yourself also. Yes. We think that we should be of your age now. Yes, I mean, absolutely. You both have a wonderful and a very vibrant aura and energy. So inspiring. Really, really awesome. Hats off to you. I mean, there is like, it is seen that you are really, it is like, walking the talk. Awesome. Yeah, we will go to standing posture. I want you to speak, everyone, please. Ma'am. Yes. जब हम खड़े रहते हैं तो लोगों के अगर चप्पल या शूज देखे तो उनकी जो हील्स रहती है वो पूरी तरह से दबी हुई रहती है या वन साइड ही दबी हुई रहती है? Very good, very good, very good, very good. Okay. हाँ.
Very nice. You are thinking. Or And also when you're not aware, your body is so loose that if somebody push you, you can directly fall down. It's in that way. They are standing with no awareness, loose body posture. They're just Okay. standing like. Okay. Chalo, now let me show you. Yeah. Now first, tell me if this posture is right or wrong. थोड़ा मागे जाना. हाँ. Tell me both the postures, which is right, which is wrong. First one seems to be wrong because there is a bulge in the back and the belly is coming forward. The lumbar is bent. The other one Okay. seems to be straight actually. What is now? वैसे both were wrong, okay? Earlier both were wrong. हाँ. Why both were wrong? Go to the wrong posture again. Let us help them understand. Okay. एक है ना, उसको बोलते हैं हम sway back. Sway back. वो थोड़ा exaggerated आपको दिखा रहे हैं कि आपको समझे. है ना? We are here only talking about spine right now. ठीक है? करेक्ट. और थोड़े टाइम में उनका बैक दुखने लग जाएगा दोनों का. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग. ओके. स्विंग में क्या हो जाता है, सी हम लोग है ना, आप लोग करके देखो उठ के, पता है आप आधा मिनट भी नहीं खड़े रह पाओगे. और जब पोस्चर बदल जाता है तो यू आर लिविंग विथ इट फॉर 24/7 फॉर इयर्स टुगेदर. जस्ट इमेजिन व्हाट आर वी डूइंग टू आवरसेल्व्स. सो स्वेइंग में यू इमेजिन द पेल्विस. पेल्विस समझ आया? Pelvis मतलब anyone here? Area down to the lumbar. हाँ. ओके. तो पेल्विस का टिल्ट इमेजिन करो, आगे और पीछे और नॉर्मल. ठीक है, इतना इमेजिन कर सकते हैं हम. ओके. अभी गो बैक टू वॉचिंग देम. इसमें हम उसको बोलेंगे पोस्टेरियर पेल्विक टिल्ट और एंटेरियर पेल्विक टिल्ट एग्जैजरेटेड. ठीक है, तो एक में आपको दिख रहा है एंटेरियर पेल्विक टिल्ट इज एग्जैजरेटेड. जो कौन सा है एंटेरियर पेल्विक टिल्ट एग्जैजरेटेड? स्वे बैक. समझ आया? यू आर एबल टू रिलेट टू इट. एंड दूसरे में क्या हो रहा है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट इज एग्जैजरेटेड. ओके. Exaggerated pelvic tilts. Are you all with me? No, you are not with me. Yes. I don't see that. Imagine करो pelvis. Anteriorly कौन सा दिख रहा है? मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हो आप. पोस्टेरियरली कौन सा दिख रहा है? स्वे करके देखो, उठो अपने चेयर से सब लोग थोड़ी देर के लिए. करके ही देखो, करके नहीं देखोगे तो समझेगा ही नहीं, देख के नहीं समझेगा. आपकी पेल्विस पे, कमर पे हाथ रखो जरा और खड़े हो जाओ. हाँ. ओके. अभी स्वे करो, आगे जाओ. हाँ.
आप जब स्वे कर रहे हो तो आपका पेल्विस आगे गया कि पीछे गया? पेट आगे गया पर पेल्विस पीछे गया। और जब आप हम यानी हिप्स बाहर निकाल रहे हो, समझ रहा है? अगर बेबी है पेट में, यूजुअली उसके बाद होता है ना, यहाँ पे बेबी है पेट में, तो क्या हो गया? हिप्स जो है, आई होप यू आर एबल टू सी मी, देखो मैम उधर से, हिप्स जो है वो बाहर आ गए और ये जो है ये एग्जैजरेट हो गया आर्च, लॉर्डोसिस, और ये ऐसा चला गया। तो ये जो एंगल है आप समझो ठीक से, ये क्या हो गया? एंटीरियर टिल्ट हुआ ना, और स्वेइंग में पोस्टीरियर टिल्ट हुआ ना, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। आई होप यू आर एबल टू सी मी नाउ। अब करके देखो, पेल्विस किधर जा रहा है? एग्जैजरेटेड लॉर्डोसिस करके देखो, कमर बाहर। यूजुअली मोस्ट ऑफ द वुमेन दे हैव एग्जैजरेटेड लॉर्डोसिस। ये आर्च जो है ना, ये आगे चला जाता है, मतलब द टिल्ट पेल्विस जो है वो ऐसा चला गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बेबी, बिकॉज ऑफ द, आर यू एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग? है ना, मैं सामने नहीं हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आर यू विथ मी नॉट विथ मी। अभी क्लियर है ना? यस बेबी का वेट है तो वो बेबी का वेट जो है वो पूरे ढांचे को आगे खींचता है। बाद में ना वो समझ लो एक थैली इमेजिन करो, वो थैली का लोड है, उसने पूरे ढांचे को आगे खींचा, फिर थैली में से सामान तो निकल गया, और 9 महीना वो वैसे ही है, तो वो पूर्व स्थिति में अपने आप आएगा क्या? लाना पड़ेगा ना उसको। Right? Yes, right. So that goes to a abnormal posture. ठीक है? Whether it is anterior or posterior. तो अपन क्या करेंगे फिर? कैसे उसको नॉर्मल पे लाएंगे? कैसे उसको नॉर्मल पे लाएंगे? और सबको सेम एक्सरसाइज चलेगी क्या, जिनको एंटीरियर टिल्ट है और जिनको पोस्टीरियर टिल्ट है? क्या द्यावं लागणार? बँक स्टेटमेंट पण द्यावं लागणार? अपने आप को म्यूट रखिएगा, बाकी सब With the help of wall, we can do exercises. Asanas and exercises. Yes. Okay. So if a person has increased and lordosis or the pelvis is already आगे, imagine करोगे तो ही आप ये कर पाओगे। तो वो ऑलरेडी आगे है, तो आप उनको कैसे एक्सरसाइजेस दोगे करेक्ट करने के लिए? तो ऐसे पर्सन को अगर हमने धनुरासन दिया, शलभासन दिया या भुजंगासन दिया, तो वो आर्च और इंक्रीज हो रहा है। Forward bending के आसन। रिलेट कर पा रहे हो? थोड़ा सा मतलब I want you to just think in a little different direction, if at all you have not yet started, right? और जिसका posterior tilt है उनको कौन सा देना पड़ेगा फिर, जो हमने अभी बात की? Dhanurasana, Bhujangasana. Dhanurasana, all Bhujangasana. All back bending asanas. Right? बहुत बार ऐसे होता है ना, हमारा पोस्चर हमें कैसे समझता है पता है? रोटी बनाते हैं घर पे, या आप कोई स्टोर में गए, मेडिकल स्टोर में गए, वो मेडिसिन लाके दे रहा है, तब तक हमारा पेट है ना वो काउंटर को टच रहता है।
या ओटे को टच रहता है जब रोटी बनाते हैं, मतलब हमारा समझ गया, पैर उधर ही चाहिए और पेट अंदर खींचोगे तो वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, तो आप ठीक खड़े हो. So we don't even understand when we go into a abnormal posture. और बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते कि नहीं जब लेटे हैं तो कुछ नहीं, जैसे खड़े होते हैं सीवियर पेन. व्हाई? बिकॉज अगेंस्ट ग्रेविटी मसल्स उसको जगह पे करेक्ट पोस्चर में होल्ड नहीं कर पाती. ऐसे वक्त हमें उनको हेल्प करना पड़ता है टू रिमेन इन एटलीस्ट नियर नॉर्मल पोस्चर, सो दैट वो पेन ट्रिगर नहीं होगा बाय nerve irritation और जो भी abnormal stresses that are caused with wrong posture. Are you all? Will you explain the line of neutral pelvis? Line of neutral pelvis. There is something known as the center of gravity. Center of gravity. In other और words, there is something known as, yes. तो ना उसको हम कैसे ये करते हैं? If at all हम सिर्फ एक रस्सी ले, ठीक है? Okay, let me think. मैम तुमची मदत पाहिजे. और नीचे उसको वेट ये कर दे. I hope you are able to see it. अभी के लिए तो मैं चार्जर ही ले रही हूँ. प्लम्बर लाइन. हाँ, ओके. अभी के लिए मैंने ये लिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कैन एवरीवन सी मी? Yes, you are visible. तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये लाइन है ना, ये बीचों बीच सेंटर ऑफ हेड, ईयर लाइन, शोल्डर लाइन, देन आपका हिप इससे जा रही है नीचे. ओके, अब ये लाइन के जितना पास मसल्स रहेंगे या आपका अलाइनमेंट रहेगा, उतना मसल एफिशिएंसी ज्यादा. जितना आता मॅम फॉरवर्ड शोल्डर करा किंवा कंबर पुढे न्या तुमची. यस, ये क्या हो गया? ये लाइन से आगे चला गया. लाइन से आगे चला गया तो लोड इधर पीछे का बढ़ गया. तो हमें क्या करना है? उसको सीजी के, ओके, सो दैट लाइन ऑफ ग्रेविटी, इसका इंपॉर्टेंस इतना ही है कि वो लाइन ऑफ ग्रेविटी के जितना आगे भी मसल्स है, पीछे भी मसल्स है, तो जितना कॉम्पैक्ट, जितना सीजी के पास, उतना एफिशिएंट, उतना इजी, उतना सेफ फॉर द स्ट्रक्चर्स. So just to keep it simple, we can just understand it कि ये कहाँ से जाता है. Anyone would like to add, if at all you have already read about it? किधर से जाना चाहिए? From the navel area, center. मतलब हम उसको सामने से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साइड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? Yes. हाँ, तो अभी साइड से आइडेंटिफाई करके कैन यू टेल मी कैसा रहना चाहिए? ईयर, शोल्डर, हिप. लेट्स कीप इट सिंपल, नो? नी का कैसे चेंज होगा पोस्चर? सीजी के पीछे चले जाता है, ऐसे हो जाती है. जिनका लॉर्डोसिस ज्यादा होता है ना, एक मिनिट मैम, अभी हाँ, गुडघे टाइट करा, जास्ती टाइट मागे. कॅन यू सी? आता गुडघे थोडे सैल करून टाका. हाँ, अजून लूज करा गुडघे. हाँ, ये आ गया. सो स्लाइट मूवमेंट था वो अवे फ्रॉम द सीजी या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी. मतलब ये लाइन ऑफ
ग्रेविटी चाहिए था और ये कहाँ गया, अवे, तो उसको वापस हम नियर नॉर्मल लेके जाएंगे. सेम फॉर द एंकल, उसके मीडियो लैटरल देखोगे आप, साइड में वो जो अभी आपने बोला ना चप्पल एक साइड में घिस जाती है, तो उसका अलाइनमेंट उसके, सो दैट प्लम लाइन इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट. Thank you, ma'am, for reminding. I could think little out of the box and take my charger out. I hope everyone could understand it better. But yes, and then any questions related to the same, I would help you understand even better if you haven't understood. I wanted to keep it very simple. Should we go ahead? Yes, अच्छा आपने वो ही कर दिया क्या? Okay. Wait. हाँ. मैम इवन वी कैन मेक इट मोर सिंपल, लाइक वो जो कारीगरी दीवार बनाता है तो एक के ऊपर एक ईंटें लगाते हैं, लगाने के बाद रस्सी डाल के देखता है whether all are there in alignment or not. Yeah, very interesting actually. And then yeah, this is even more better. आता थोड़ा सा, हाँ थोड़ा पुढे या मैम. हाँ, now you tell me what you can understand. क्या ठीक लग रहा है, क्या गलत लग रहा है? अब दिख रहा है ना प्लम्ब लाइन, थोड़ा सा दिख रहा है, उन्होंने इजी बनाने की कोशिश की है आपके लिए. और Seems to be in center. हाँ Properly proper posture, that means. हाँ, पोट अजून आत घ्या मॅम, पेल्विक टिल्ट करा नॅचरल. हाँ, सब लोग खड़े रहो, तो जरा खड़े रहो जरा सब लोग. हाँ, and let's just practice this pelvic tilt that I am talking about. हाँ, अभी आप एक हाथ पीछे रखो, एक हाथ आगे रखो, पैर बिना हिलाए जस्ट पेट अंदर लो. अभी आपने क्या किया, आपने पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट किया, थोड़ा समझा, पेट अंदर खींचा तो पेल्विस कैसा गया, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट. उससे ज्यादा हो गया तो ये स्वेइंग में चला जाएगा. बट यूजुअली मोस्ट ऑफ अस we get trapped into this issue of having exaggerated lordosis. तो anterior pelvic tilt है, पेट अंदर लो, खींचो, करो posterior pelvic tilt. Let me see. पेट अंदर, सबके नहीं वीडियोस ऑन ना. ओके, leave the tilt. Tighten again. हाँ ठीक. Okay. You could identify for yourself. Okay. The tilt is definitely important when we are standing, when we are walking, when we are doing our day-to-day activities. This little tilt can help us remain in a better posture. So neck हमने बात की, shoulders हमने बात की, टिल्ट भी बात कर ली, नी के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लिया. ओके, कैन वी गो टू लाइंग पोस्चर नाउ? इज दैट ऑल्सो इम्पोर्टेंट? डेफिनेटली यस. व्हाट डू यू थिंक, लाइंग में क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज पोस्चर सो इम्पोर्टेंट इन लाइंग? पिलो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
You can have it, but from the shoulder, back of the, below the shoulder it should be. Otherwise, if it's a fine, you cannot take. It is okay. But those who need it, they should use it below the shoulder line. Okay, good. Well, what I have seen is, as per my experience, understanding is, if the pillow is not taken, the neck will fall down because of the weight of the head, and this crowding will happen in the upper. Keep your hand below the neck again, neck ke piche, and imagine you are lying down. See what is happening to the neck. It is going. So the people who complain of headaches, no, ये यस ऐसा थोड़ा एग्जैजरेटेड दिखा दिया आपको, है ना? तो ये नेक अभी करेक्ट पोस्चर में नहीं है ना, मतलब। तो हमको क्या करना है? शोल्डर ब्लेड्स जस्ट प्रेस इट ऑन द बेड, तो शोल्डर करेक्ट हो गया। एंड देन प्लेस अ पिलो। सबका पिलो का साइज अलग अलग हो सकता है, हो सकता, yes, and take it up to the shoulders. The main intention of the pillow is to keep the neck in neutral position and support the neck muscles so that they can be relaxed, because अगर यहाँ पे गैप रह जाता है, बहुत सारे लोग सिर्फ हेड के नीचे पिलो लेते हैं और यहाँ गैप रह जाता है, तो नेक मसल्स को रेस्ट मिलेगा क्या? नहीं। हेंस जो आपने बोला वो बराबर है मैम, अप टू द शोल्डर पुल करना है, राइट? और अगर एक करवट पे सोते हैं तो भी वो गैप फिल करना अप्रोप्रिएटली। सो अच्छा, नी के नीचे आप पिलो दोगे कि नहीं? In supine posture, it's actually if there is a lot of gap, काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा नी बैंड है, so you can allow them to keep something, a roll of towel or a small pillow would work. okay. So my advice is, ma'am, let's not do that, because that will increase the fixed flexion deformity or take it into fixed flexion deformity. थोड़े दिन के लिए किया तो कुछ नहीं, जब सीवियर पेन में है। Yes, बट अगर मुझे ये बरसों से वो आदत ही लग जाती है, तो देन धीरे धीरे नी वो पोजीशन में फिक्स हो जाएगा, which will change my entire alignment. Okay? With me? Got it. Okay, now let's go to sideline. Sideline में can we have a, इससे क्या help होगा? Simple pillow in between both the knees. Pelvic remains properly, otherwise like it goes towards each other. दोनों जो girdles हैं. Correct. करेक्ट। सो मतलब हम बोलते हैं कि वो इंटरनली रोटेशन में रहेगा, तो इट वुड बी एडेड स्ट्रेस। और बहुत सारे लोगों को वो एक ही साइड में सोते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है, हस्बैंड इधर सोएगा, वाइफ इधर सोएगी, तो दोनों अगर इधर, हाँ, अगर रोज झगड़ा हो रहा है तो अपोजिट साइड में मुड़ेंगे, लेकिन अगर बात करनी है तो फिर वो फिक्स हो जाएगा कि यही साइड से सोना है, तो क्या होगा? So we need to take that little extra care. Okay. So now again neck, ये गैप को फिल करना है। इसमें भी यही होता है, बहुत बार लोग अगर नहीं पिलो लिया तो देन तो इट इज वर्स्ट यू कैन डू, बट रोल लिया, टॉवेल रोल भी लिया, तो बहुत अगर बड़ा ले लिया तो क्या होगा? गर्दन ऐसे जाएगी। बहुत सारे लोगों को वो आदत होती है, तो वो भी नहीं करना है। So it needs to be just enough. So remember that the role of the pillow is to keep the neck in neutral position throughout the rest period. It could be 4 to 8 hours or so, right? Entire night, you know.
सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पर अगर बहुत पेन में कोई आता है तो उसी वक्त उनका पोस्चर मत चेंज करना। बरसों से मेरे हर एक सेल को एक आदत है, तो पहले थोड़ा पेन कम करो और उसके बाद फिर पोस्चर पे काम करो, एंड देन टेक देम टू व्हाटएवर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट चेंज फॉर देम। ओके, देन वन मोर थिंग इन स्टैंडिंग, जैसे हमने प्लम लाइन से देखा वैसे हम क्या कर सकते हैं, वॉल सपोर्ट भी असेस कर सकते हैं। भिंतीला टेकून उभं राहा मॅम, easy to identify, no? Like plumb line, क्या करना है, यहाँ का गैप चेक करोगे आप, गर्दन का, वो कैसे कम करोगे? टक द चिन इन, थोड़ी सी हनुवटी आत घ्या मैम, हाँ, दोनों शोल्डर ब्लेड्स पीछे टच कर दो, यस, पोट आत घ्या, पेल्विक टिल्ट करा, ये भी गैप कम हो गया। अदरवाइज क्या होगा, जो गैप है, थोड़ा हाथ असा घ्या मैम, हाँ, आधी गॅप दाखवा, सी यहाँ पे गॅप है, आता पोट आत घ्या। Everyone, if you want, you can do it right now to understand your own posture. This is a very beautiful, check. कि just stand wall support and see what is happening. दोनों knees थोड़े आगे ले लो, थोड़े पाय पुढे घ्या, अजून पुढे घ्या, अजून पुढे घ्या, and bend like you're sitting on a chair. हा, आणि बस, that's it, थोडं वरती, आणि हात असे. हा, can you also do this? दोन्ही पाय पॅरलल करून टाका, शोल्डर ब्लेड्स मागे, हनुवटी आत, पोट आत. This is a beautiful postural correction exercise which could be given easily to people, है ना? It is beautiful कि chin tuck in, tuck your chin in, pull your shoulder blades पीछे, do the pelvic tilt that we just did, relax and keep a smile on your face. Simple correction. Can it help you? Change note. Yes? Yes. Okay. So now where are we? Lot of learning. Just a minute. Let me just on the camera. Yeah. So we did little bit of posture, lying, sitting, standing, small variations. But इतना तो समझ आ रहा है कि yes, our alignment is important. और alignment में बहुत सारे stressors हैं. Yes, there are gadgets. We can use them more efficiently and appropriately. जैसे सेल फोन हाथ में पकड़ने से अच्छा है कि मैं सेल फोन नीचे रख के, टेबल पे रख के यूज करूं, या सामने उसको ये कर दूं, है ना? You can mount it so that your hands are free. क्यों? अभी आप थोड़ी देर के लिए जस्ट हाथ ऊपर कीजिए. Imagine you are having a phone, clicking a selfie. हाँ, अभी 10 सेकेंड, 20 seconds, half minute, 1 minute. और कभी कभी तो अपने को समझता भी नहीं है ना? आजकल पीपल हैव कि बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, अपन कहीं और है, या जो भी चैलेंजेस है, कितना टाइम तक हम फोन हाथ में पकड़ लेते हैं ना, फॉर द वीडियो कॉल्स, राइट? सो व्हाट विल हैपन टू द नेक मसल्स? रोएगी ना वो, उनकी कैपेसिटी से ऊपर चला गया तो दे विल गो इनटू गार्डिंग एंड टाइटनेस.
right? So what could be done? Just align yourself better, make yourself comfortable. So what is the right posture for that? स्क्रीन कहाँ होना चाहिए? कितना दूर होना चाहिए? 1.5 to 2 feet. Good. Okay. Around 18 inches depending upon everyone's ये. और अच्छा, बहुत सारे लोगों को लैप पे लेके बैठने की आदत होती है ना, फोन, या हाथ में ही पकड़ लेते हैं, ऐसे करना चाहिए क्या? तो क्या बेटर है? अगेन कीपिंग इट डाउन. फिर सिंपल है कि हमें अभी नॉर्मल पोस्चर समझ गया है, थोड़ा बहुत तो समझा है, Yes, लिटिल ma'am. Yes, yes. थियोरी आप जाके पढ़ लेना, है ना. मेरा काम था थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेके आना, है ना. तो हमें अपने आप को नियर नॉर्मल पोस्चर में रखने की प्रैक्टिस करनी है. सो व्हाट कैन आई डू? आई कैन अगर वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो अगर बहुत पास है तो मुझे नेक बेंड करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा दूर लेके गई, नीचे रखा, उसको भी थोड़ा ऊपर उठाया तो मेरा नेक न्यूट्रल में रह रहा है. फिर उसका एंगल थोड़ा सा ऊपर उठाना इज बेटर देन मेरा नेक का एंगल कंटिन्यूअसली मैं नीचे रखूं, राइट. बहुत सारे लोग हैं जो माउस यूज करते हैं, या इवन ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर आपका ऑटो कार नहीं है, रेगुलर है, तो क्या होगा, ऑल द टाइम वो गियर पे एक हाथ रहता है, वहां पर पिलो रखना जरूरी है. बहुत बार सब्जी काटते हैं, कुछ करते हैं, व्हाटएवर आपके डेली चैलेंजेस, हम बिना वजह एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं आटा गूंदने के लिए. यू कैन कीप इट रिलैक्स इन अलाइनमेंट एंड डू इट, नो. बट वो आदत हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, वो पूरा उधर निकलता है और वो पोस्चर चेंज हो जाता है और समझता भी नहीं. I know someone, यानी my mentor had shared this story with us in 2004 की बात है ये. तो उन्होंने कहा कि एक क्लाइंट हमारे पास, तब तक आई डिड नॉट नो मच अबाउट दिस कैन आल्सो बी पॉसिबल. तो बोले कि वो जो सासू थी ना, वो पीछे से कुछ वो बहू को बोलते रहती थी और ये उल्टा जवाब तो नहीं दे पाती थी. तो यहाँ पे वो काम कर रही और यहाँ पे वो ऐसे करते ना, दांत तोड़ खातो ना, ऐसा. हाँ, वो करो सब थोड़ी देर के लिए, सी व्हाट हैपेंस टू द नेक. हाथ पीछे रखो, टाइटन, व्हाट इज हैपनिंग टू द नेक. एक बार किया तो कुछ नहीं, अगर रोज का ड्रामा है तो क्या होगा. हाँ, सो व्हाट डिड शी डू टू हरसेल्फ. तो अपन इधर से कितना भी मेहनत करो, ठीक करो, अगर उधर जाके रोज वही सीन रिपीट होने वाला है तो व्हाट विल हैपन. तो उसके वजह से अपर लेवल्स इन्वॉल्व हो गई, चक्कर आना और सर दुखना, वो बंद ही नहीं हो रहा था. और जस्ट ये चीज थोड़ा सा चेंज किया और क्या हो गया. So many things could affect us, no, we don't even realize. There are so many influences. There could be, and the influences could change 10 years from now, 20 years from now. It will keep on changing. But we need to understand the normal reference point. We need to work on our own muscle efficiency and keep it as near normal as possible with simple tools, na? Little awareness, little better state of emotions, and working on your muscle efficiency. सिंपल, टाइट मसल्स है उसको रिलैक्स करो और जो वीक है उसका एफिशिएंसी बढ़ाओ. पोस्चरल मसल्स का अभी से एफिशिएंसी बढ़ाओ. अगर वो इम्बैलेंस में नहीं गए है तो बहुत अच्छी बात है, जाने ही मत दो.
एंड लिटिल इफ यू आर अवेयर तो आप उतना लेवल पे नहीं जाने दोगे उसको कि वो पूरा उस इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाए कि देन इट इम्पैक्ट्स द नर्व्स, फिर नर्व पर प्रेशर आता है, फिर हाथ में रेडिएशन आते हैं, फिर सियाटिका हो जाता है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? अल्टर्ड पोस्चर के वजह से ही आते हैं ना। We have only talked today about static posture. Dynamic challenges would be even different when I have to lift weight, when I have to bend. It's a very challenging thing. लोगों को, I mean, जो patients हमारे पास आते हैं, they are like, नहीं अब करूँ तो मैं क्या करूँ? बैक पेन है तो डॉक्टर ने बोला है नीचे नहीं बैठना, पर मेरा घुटना भी दुखता है, तो मैं वो इतना डर डर के नीचे जाते हैं कि क्या अभी कहाँ से क्या करूं, क्या मैं रोज काम तो मेरे को ही करना है ना. Who will come for support? So we can help them definitely with a little understanding, making their life easy. कि जो heavy चीजें हैं उसको आप ऊपर शिफ्ट करो ना. जो मेरे को रोज उठाना है, तवा है, कढ़ाई है, you know, which are little heavier, which I know that constantly I have to bend. I can do a little smart work and you know कि वो बार बार stresses हो ही नहीं. Can we do that? Little changes can make a huge difference. It's just about understanding what is normal reference point and how can we best take it to near normal if not normal. ठीक है. लिफ्टिंग वेट में सिर्फ पेल्विक टिल्ट भी याद रखा एंड थोड़े से चेंजेस याद रखे. वी हैव आवर वीडियोस अपलोडेड ऑन यूट्यूब. आप लोग अभी कितने लोग हो यहाँ पे, whatever, like around 30 people, 29 people in. I would request each one of you to go on the channel and just press the subscribe button, go on the playlist. Empower Physiotherapy नाम का playlist आप रेफर कर सकते हो. वहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको और डिटेल्ड मिल जाएगा. इवन एक्सरसाइजेस रेफरेंस पॉइंट भी कुछ मिल जाएंगे. और वी कैन हैव वन मोर सेशन in reference to whatever you feel you want to know more from my level of understanding. Whatever I have read, I have understood, I have in my experience, I would love to share it freely with you all. Yes, definitely, So, Pallavi. should we complete for the day? One thing I would like to, you have got your book on your table. Just show it. Yes. Yes, this book is very wonderful and really the door to confidence opens here. So she gives so much relief through her writing the messages in these books, and she is sharing her own experiences. She is sharing her own. I have read it, that's why I am telling you. So do refer it, and you can have this book definitely in your library also. And it's such a wonderful, graceful, she explained about the posture. So you also be the graceful like her. She's very, very graceful. I know her. So, we can be also beautiful. Actually, our backbone, our posture makes to have a great personality and also a long life and have a graceful life also as she has. So we pray God that let us enjoy that type of personality we should have. So over to Jyoti or Shanti. It's very wonderful. It's very, and with demonstration, not only the theoretical or picture type way, but it is a live demonstration that has given more understanding to all. Any questions if you have? I will just have another review. So you can have the questions if you have. She will definitely explain you very nicely.
Ma'am, could you share the YouTube channel link as well as the book name in the chat? Yes, I will do that. Just a minute, I'm just doing this thing. Yes. You can just put to remember only Magician Pallavi. And if you just Google it by these two names, Magician Pallavi, you will get it. But I am here putting the link also for you. And also name of the book, ma'am. Yes. It is also available on Amazon. And I can leave for few copies with ma'am also. And also it is available at Empower Center, Old Gangapur Naka. Yes. Yep. Yes, questions any? Yes, I will have questions. Yes, ma'am, about in the lying down position, usually what happens, people take their arm below the pillow. So how, like either that way or maybe somehow they are keeping it just under their head and they cannot sleep without those positions. So how can we correct them then? So Yeah. The hand needs to be out. It could be up in external rotation. But then you can help them sleep in the most comfortable position when it comes to hand कि आपका body आपको हर चीज बताता भी है. Right? So respecting the body's signals is very important. So they can take a comfortable Freeze हो गए. Freeze हो गए. mute हो गया क्या? Pallavi, you are mute. Pallavi, you are mute. एक साइड में आता है और नेक ऐसे जाता है और यहाँ पर पिंच हो रहा है तो it would be a problem. But if my ear to shoulder, that length is maintained and the shoulder joint is free, then I need not worry. अगर वो joint पे compression आ रहा है तो सिर्फ उसको at ease position में मुझे place करना है by helping them. अभी हम तो यहीं पे ये करते हैं कि ओके देखो ये appropriate है क्या, ये appropriate है क्या, and then you help them. क्योंकि हम कितना भी लॉक करें, याद रखना कि रात भर वो सेम पोजीशन में रोबोट की तरह नहीं सो सकते. So we need to help them understand their own body signals, and that is more appropriate, है ना? Yes, yes. Also we missed out on कि जब आप पेट पे लेटते हो तो make sure that you can take a pillow under the lower abs. That is advisable. Pillow under the lower abdominals. Why? As we said, अगर वो नहीं लिया तो lordosis increase होगा. जैसे ही आप पिलो लेते हो एब्स के नीचे, आप lordosis को आर्च को flatten करते हो. So you are putting it definitely at ease if they are comfortable lying on the tummy. Okay, so that is more better. बहुत सारे लोग हैं जो hot water fermentation लेते हैं तो उनको पेट पे लेट के पेट के नीचे पिलो लेकर ही ऊपर hot water fermentation अगर हमने लेने के लिए बोला तो that is more better than putting the heat bag and then lying straight on it. Right? So we need to just remember about that also. Yeah. Yes. Any questions? Any questions?
कीर्ति ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल वन मोर थिंग. बहुत सारे लोग हैं ना जो, जैसे हम चेयर पे बैठे हैं तो हमने देख लिया कि चेयर है तो हम इधर सपोर्ट लेंगे, पर बहुत बार ऐसे होता है कि पीछे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. समझ लो बेड पे बैठे हैं या ऐसे सोफा पे बैठे हैं या काम कर रहे हैं, तो पीछे नहीं सपोर्ट लेके काम नहीं हो सकता. तो फिर क्या कर सकते हैं हम इन दैट केस? टेक अ पिलो आगे, है ना. If at all you have pillow and if you are at your home, you can try this with me right now. Just get a pillow. Keep it horizontal and just place your hand on. Do you feel that it is a good feedback and you are able to remain tall automatically? Yes, it will avoid you from going down and slouching. हाँ, so अगर पीछे सपोर्ट नहीं ले पा रहे तो हम आगे भी सपोर्ट लेके अपने आप को टॉल रख सकते हैं, right? We have a healthy cooking series, playlist on my channel, and in that playlist we have uploaded like for 1 year entire, every week we upload videos, और हर एक वीडियो में एक रेसिपी होता है और एक फिजियो टिप होता है, and then we have one positivity tip. तो वो जो फिजियो टिप है ना, उसमें आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे guidances मिल जाएंगे which would be very helpful when it comes to posture. Okay, or you can take a support आगे on the table. तो उससे क्या किया हमने? डीलोड कर लिया. डीलोड का शब्द का अर्थ समझ रहे हैं आपको? कि जो लोड कंसिस्टेंटली लो बैक पे आ रहा था वो हमने टेबल पे शिफ्ट कर दिया. उसका कुछ परसेंटेज टेबल पे चले जाने के कारण वो लोड जो है वो बैक पे आने वाला कम हो गया. तो नेचुरली यू आर कीपिंग योर बैक सेफ. क्लियर नो? थोड़ा समझ आ रहा है ना? यस, अभी थोड़ा सा हेवी हो गया स्पेस, ज्यादा हेवी हो गया. No, ma'am, it's in very easy way you are explaining. Very simple, easy to understand, ma'am. You have explained everything. Thank you so much. So, thank you to each one of you once again. Thank you to मैम प्लीज Puran ma'am. एक पूछना था. हाँ जी. मराठीत बोलू? हो प्लीज मराठीत बोलता येईल अगदी. लहान सारिका ओपन हो. मॅडम, लहान मुलं ज्या वेळेस अभ्यास करतात, म्हणजे शाळेत बेंचवर असू द्या किंवा घरी स्टडी टेबलला, तर त्यांना बुक नेहमी अशी क्रॉस मध्ये ठेवून लिहायची सवय असते. ते त्यांच्या लक्षात येत नाही पण त्यांना त्रास होतो. तर ते करेक्शन मुलांना कसं करता येईल? हाँ, see whether it is any एनिथिंग रॉंग. आता नॉर्मल काय आहे ते तर आपल्याला माहिती आहे. आपण त्यांना सांगतोच की अरे असं सरळ ठेव, मग असं उंच घे, मग असं बस. पण टोकलेलं तुम्हाला तरी आवडेल का? नाही. हा, टोकलेलं कोणालाच आवडत नाही. हे लक्षात ठेवायचं आपण. मग काय करायचं टोकायचं नाही तर? कारण टोकलं ना ते अजून करतील. मग काय करायला पाहिजे? Okay, so see, you can have your own creative way. आम्ही काय केलंय माहितीये का? आम्ही ना एक शब्द ठेवलेला आहे फक्त, पोस्चर म्हटलं की मग सगळेजण, कारण आपण कामाच्या ह्याच्यात लक्षात नाही राहत आपल्याला. आजही आम्ही एकमेकांना आठवण देतो. मग पोस्चर म्हटलं की हा लगेच थोडस बसून घ्यायचं है ना. पण मग पोस्चर म्हटलं की ते आपल्याला एकदम काय म्हणतो ना, डिफेन्सिव्ह मध्ये नाही जात, राईट. दुसरा वेळ कसा आहे माहितीये का? तुम्ही आजपासून सुरुवात करा. असं मुलांना सांगा की अरे मला ना असं मी शिकले आणि मला हे लक्षात आलं, तर आता जर तुम्ही मला असं बसलेलं पाहिलं ना तर मला आठवण द्या बरं का.
मग तुम्हाला आठवण देता देता काय होईल? मुलांनाही सवय लागून जाईल त्याची. आपोआप सवय लागेल, है बरोबर. ना? मग तर मेनली त्यांना ऑनेस्टली शेअर करणं की अरे हे महत्वाचं आहे आणि तुम्ही मला आठवण करून द्या. दॅट्स बरोबर. इट. आणि मग त्यांना ना काहीच नाही करायचं, खूप असं बोलायचं नाही की अरे असं नाही बसायचं, असं बसा. जायचं, पाठीवर हात फिरवायचा, थोडस उंच करायचं, सरळ करून द्यायचं, निघून जायचं. असं बस म्हणायचं, हे छान दिसतं. ठीक आहे. Positive reinforcement, that is called positive reinforcement. Yes. And that really works with children. We have to be very, very careful and handle it very compassionately and very differently. So everyone likes to, sit more graceful, look more graceful, but we don't understand it. And when we know, abhi bahut baar aise hota hai na, people who come to us even for slimming, तर वजन एवढं वाढलेलं नसतं, पण एंटेरियर पेल्विक टिल्ट मुळे ते जास्त दिसतं. फक्त पोट आत घेतलं ना, जे आपण फोटोसाठी 1 मिनिट घेतो, तर तसं तशी जर सवय लावली तर युअर हाफ वर्क इज डन. आणि इफ यू यूज युअर मसल्स मोर, the tone will increase. No, the problem is we don't use them, so we lose them, and then it becomes lax, and then we feel bad about it, and then it becomes even more. So yes, I hope I answered your questions, and thank you to sir, ma'am, to each one of you for being here, for participating fully, wholeheartedly. Thank you so much for giving me an opportunity to contribute in any which way in your life. Thank you so much. Thank you, ma'am. It was opportunity for learning us. Thanks a ton. Thank you so much, ma'am. It was such a wonderful session. It was so exciting. Early, actually, I was planning to go out. I was having some important work, but just because of the session, I remained here. Very nicely explained. You explained each and every posture. How actually these are very simple things. Everybody may be aware of. Maybe I would say we are not aware of. We knows everything, but we are not aware of. So you gave us the idea to be of the awareness, to be of the positivity, and definitely muscle strength. So thank you so much for such a wonderful session. Would love to hear more from you. That would be really nice. Thank you so much. Yes, ma'am. Kirti. Thank you. Thank you, Pallavi ma'am, for such a nice and wonderful session. आपने बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे में हम सब लोगों को समझाया कि अपना पोस्चर कैसे करेक्ट रखें और छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के हम उसको नियर टू नॉर्मल कैसे रख सकते हैं, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया. मैं लास्ट योगा थेरेपी में थी, तब भी मैंने आपका लेक्चर सुना था एंड आई फॉलोड दैट. और अभी मैं सबको भी वो सिखाती हूँ. जैसे आपने वॉल का सपोर्ट से बताया था, वो मेरे दिमाग में अभी तक है और मैं स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल सेशन. और आपको आगे भी हम ऐसे ही अपने योगा प्रबोधिनी में चाहेंगे कि आप और लेक्चर दें और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें. थैंक यू सो मच. योग में जो समकाय शिरोग्रीव बोलते हैं ना, बस वही उसने बताया है. That is wonderful. She followed the same our ancient guidance from the scriptures. So thank you very much, Pallavi. Thank you very much. Again. I personally feel the same, ma'am, कि हम modern world में enter तो कर रहे हैं, whether it is by physiotherapy or any that would come, आगे, but हमको ancient wisdom को alive रख के, साथ रख के आगे बढ़ना है, and that is what is my इंटेंशन. और मुझे भी यही लगता है कि नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने शायद हमको ही पैकेज करके और पॉलिश करके हमको ही दिया है. तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है और हमें
that is, keeping and understanding your own beauty. It is such a strong spiritual culture that we have in India, and the wisdom that we have, if we keep it alive, it is half work done. So yes, that is what you rightly said, ma'am, and that's what I practice. I would request you do refer her book, the Here the Door Opens to Confidence. So that is also wonderful. She is a combination of all, beauty, talent, activity, and all. Thank you so Right. much. A wonderful personality we had today. Yeah, yeah. So can we end the session with Yes. prayer, Kirti? Yes, yes, ma'am. So everyone sit in meditative posture, hands in Dhyan Mudra, chin tucked in. We'll chant Triyonka. Take a deep breath. Inhale. Exhale. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्. Gently rub your palm. Keep it on your eyes. Feel the warmth. Slightly open your eyes. Gently open your eyes. Hari Om, all of you, thank you. Thank you, all of you. Join tomorrow also. Tomorrow, Swami Sri Kantanand Ji will be talking on the how to live life, day-to-day tips from the Gita. So he is also a wonderful speaker, very informative and very devoted person. So tomorrow's session is at 6 or 5:30? Yeah. Tomorrow will be 6 at o'clock. 6 o'clock. Tomorrow is 6 o'clock. Okay. Thank you so much. Thank you, all of Thank you. you. Thank you, Pallavi, ma'am. all. Thank you very much. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am.